Hello friends, and how are you doing today, and thanks for catching up once again. Today's video is related to one of the new cue cards, and I'm going to share the idea behind the cue card and sample answer in today's video. The cue card is talk about something that you purchased from an outdoor or a street market. आप सबने ये क्यू कार्ड प्रिपेयर करना है अगर आप in future, that is in the month of October, November, IELTS exam देने का plan करें, because there are high chances examiner आपसे Q card ये वाला पूछे. Well, the Qs can be what did you buy, when and from where did you buy, how was the overall experience. तो outdoor और street market की बात करनी है, और being Indian हम सबको आउटडोर मार्केट का एक्सपीरियंस डेफिनेटली रहता है. छोटे सिटीज में जहां पर मॉल्स होते नहीं है, 90% स्ट्रीट मार्केट्स में शॉपिंग करते हैं, और बिग सिटीज में रहने वाले भी यहाँ पर स्पेशली जाते हैं. चंडीगढ़ की बात करें तो वहाँ का सेक्टर 22 बहुत पॉपुलर है. दिल्ली की बात करूँ तो वहाँ की सरोजनी जैसी और बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पर लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं. आइडिया बिहाइंड द क्यू कार्ड इज दैट आप अपने किसी फ्रेंड के साथ किसी शॉपिंग मॉल में गए और वहां पर आपने एक बहुत ही प्यारा बैकपैक देखा. बीइंग स्टूडेंट आपकी जरूरत रहती है, आप इसे यूज करते हो, लेकिन वो था टॉमी ब्रांड का, या आपको जो भी अच्छा लगे वो ब्रांड की बात कीजिए, अमेरिकन टूरिस्ट की बात कर दीजिए. अब जब आपने प्राइस पूछा तो प्राइस निकला 7,000, 8,000, 10,000, जितना आपका मन करे. एंड द टाइम यू लिसन टू द प्राइस आप लोग वहां से गायब हो गए, क्योंकि इतना महंगा आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे. हुआ क्या, एक दिन जब आप अपने फ्रेंड के साथ या मदर के साथ किसी के साथ भी एक स्ट्रीट मार्केट में रेगुलर शॉपिंग के लिए गए तो वहां पर आपने उस बैग का रेप्लिका देखा. रेप्लिका मतलब बिल्कुल नकल, जैसे आईफोन्स कईयों के पास रेप्लिकास रहते हैं, तो सेम वैसा ही दिखने वाला. अब जब आपने उसका प्राइस पूछा तो यहाँ पर वो प्राइस था सिर्फ 1,000. और यहाँ जो स्ट्रीट मार्केट्स हैं उनकी एक खासियत रहती है कि आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं. तो एंड यू कैन से दैट आई हैव बार्गेनिंग स्किल्स. और जिससे मैंने वो प्राइस फर्दर ड्रॉप करवा के 5, 4, 700 जितना भी आप कहना चाहें उतने में वो बैग ले लिया. ऑफ कोर्स अब उसकी क्वालिटी वैसी तो होगी नहीं जैसे ओरिजिनल टॉमी वाले बैग की होगी, लेकिन वो बहुत ही स्टाइलिश एंड फैशनेबल बैग था जिसे मैंने थोड़ा टाइम एंजॉय भी किया, लेकिन आफ्टर फ्यू मंथ्स वो टूट गया या खराब हो गया. बट ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस था वो काफी मजेदार था. अगर ये आपको आइडिया अच्छा लगे तो कंटिन्यू टू वॉच द वीडियो एज आई एम नाउ गोइंग टू शेयर द सैंपल आंसर विद यू. आई होप यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब माय चैनल. इफ नॉट, प्लीज डू इट एंड press the like button if you like my videos, and in the comment section never forget to tell me what other cue cards or other videos you want me to prepare for you. तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे आते हैं और स्पीकिंग क्यू कार्ड्स वीडियोस वगैरह देखते हैं तो यहाँ पर प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए. यहाँ पर लिसनिंग, ग्रामर, राइटिंग, स्पीकिंग, हर एक चीज रिलेटेड प्लेलिस्ट बन रखे हैं, एंड अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन वॉच द वीडियोस एंड इम्प्रूव योर स्कोर इन द IELTS. तो स्टार्ट करते हैं इसका सैंपल आंसर जो मेरी स्पीकिंग बूस्टर मेरी इलेक्ट्रॉनिक बुक में रहता है. आप जब चाहें इसे परचेज कर सकते हैं इन लेस देन 30 सेकेंड्स. और इस वीडियो के रिमेनिंग हाफ में एक कार्टून आपको बताएगी कि आप ये बुक कैसे बाय कर सकते हैं. Well, shopping at street markets is very common thing in my country because most people prefer such markets as they cannot afford to buy things at shopping malls. Here I would like to share my recent experience of buying a backpack from a flea market. ऐसे मार्केट्स को फ्ली मार्केट भी बोल देते हैं, साडे पंजाबी विच इहनूं फड़ी मार्केट भी बोलते हैं. फड़ियां दे ऊपर थल्ले बैठे हुंदे बेचारे ते शाम नूं चक्के भज भुज जांदे हैं. Now, actually some time ago I was in a shopping mall with my friends for window shopping. Of course यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन कवर हो जाता है. बीइंग अ स्टूडेंट आई गेट लिमिटेड पॉकेट मनी, तो मॉल्स में तो हम शॉपिंग कर नहीं सकते, लेकिन वहां पर विंडो शॉपिंग के लिए जरूर जाते हैं हम. देखो लेकिन बाय मत करो. Where I saw a backpack at Tommy Hilfiger store. I couldn't keep my eyes off as I liked it so much. However, we looked from the store when we came to know about the price, which was 7,000 rupees. Luckily, last Sunday when I was at the street market in my hometown with my parents, I came across exactly the same bag, but it was a replica, not the original one.
The tag on this bag was only 1000. The good thing is that at street markets we can negotiate the price, and with my bargaining skills I got this bag for 400 rupees only. It's a beautiful bag with leopard print, which is my favorite, and I purchased it at a very reasonable price. I was so glad to get my dream bag, and now I was flaunting it to my friends who were really jealous. Of course, the quality of this bag was not good, and as expected, it got damaged in couple of months. But the overall experience of carrying this high brand bag was unforgettable. And that's it. I hope you comfortably followed the idea behind the cue card and the sample answer and the simple and easy language that I have used. Maintain the fluency in your real speaking exam. Speak confidently. Do not try to rote. Try to bring your own element. Introduce more things from your side, and you are really going to rock in your IELTS speaking exam. Thanks for watching today's video. Bye bye for now. First of all, download IELTS coaching application from Google Play Store. If you are an Apple user, then download My Institute app and enter code IELTS IELTS. On home page, click on Store and choose Speaking Booster. Click in Buy Now and pay online to unlock the book for next 6 months. And that's it. You're done. Happy buying!